Hello everyone. So today we are going to study about acids, bases and salts. Before that, I just want to request to you all, do please like, comment, share and subscribe to my channel. Also, if you want any particular topic of your choice to be explained by me, please do let me know below in the comment section. I will definitely make a separate video on the topic suggested by you guys. Okay, so let's proceed with this topic, which is very important topic of chemistry. Uh, Acids, bases and salts. I've tried and included as much as I can, and I've tried to include important topics about acids, bases and salts. Today we are going to study about what are acid, bases and salts, what are the properties of these compounds, then like where they are used, what are the applications, what are the theories associated with these molecules, and so on. Okay. So before proceeding, we need to understand how acid, bases and salts are important in the chemistry. So see, it makes the core of the chemistry, core of acid base chemistry, because acid, bases and salts are very important in chemistry, for that, or any particular reaction, chemical reaction for that matter. Everything involves acid, bases or salts. Okay, understanding their properties, the theories associated with them, the reactions that they undergo to become a salt or to become any compound is very essential to understand advanced chemistry. Okay, application ranges from biological systems to industrial processes. The applications are wide in for like acid, bases and salts. There are so many applications. It ranges from biological systems to industrial processes. So by that you can understand how vast applications you know are there for acid, bases and salts. So what are the general theories which are associated with acid and bases? Arrhenius concept is first theory, which was given by Arrhenius, which described acids as they release the H plus ion. See, acid का जो compound होता है ना, if you know, so for example if we consider HCl, तो उनके अंदर ना H आयन्स या हाइड्रोजन आयन बोलोगे या मॉलिक्यूल बोलोगे या एंटिटी, वो प्रेजेंट होती है, तो H आयन्स को वो रिलीज करते हैं. तो एरीनियस ने बोला कि जो भी कंपाउंड्स H आयन को रिलीज करते हैं उन्हें हम एसिड्स बोलेंगे, बिकॉज वी नीड अ डेफिनेशन एट दैट टाइम कि किसे आप एसिड बोलोगे, किसे आप बेस बोलोगे. सो प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद, सब कुछ समझने के बाद, Arrhenius अंडरस्टूड इट लाइक दैट कि जो भी कंपाउंड्स H प्लस आयन रिलीज कर रहे हैं उन्हें हम एसिड्स बोलेंगे, एंड जो भी कंपाउंड्स OH माइनस आयन रिलीज कर रहे हैं इन एक्वस सोल्यूशन, उसको हम बेस बोलेंगे. जो भी एक्वस सोल्यूशन के अंदर H प्लस रिलीज कर दे वो एसिड, जो OH माइनस रिलीज कर दे वो बेस. Okay, this was the concept of Arrhenius. ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट क्या था? ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड इज अ प्रोटोन डोनर. प्रोटोन इज व्हाट? H प्लस आयन. H प्लस आयन को ही हम प्रोटोन बोलते हैं. इट्स अ पॉजिटिव आयन. पॉजिटिव आयन इज नोन एज प्रोटोन हियर. एंड एसिड इज अ प्रोटोन डोनर. प्रोटोन डोनर यानी कि H प्लस डोनर. एंड बेस इज अ प्रोटोन एक्सेप्टर. प्रोटोन एक्सेप्टर यानी कि H प्लस आयन को जो एक्सेप्ट करता है, जो रिसीवल एंड पे होता है, वो बेस हो गया, और जो प्रोटोन जो डोनेट करता है वो एसिड हो गया. लिवाइस कॉन्सेप्ट. व्हाट वाज लिवाइस कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड एंड बेसिस? सो ही सेड एसिड एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर. उन्होंने कहा कि एसिड जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, एंड बेसिस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं. व्हेन यू से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन इज इन नेगेटिव आयन, राइट? E माइनस उसका साइन होता है. सो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है बिकॉज इट इज डोनेटिंग द प्रोटॉन, इट इज डोनेटिंग द H प्लस आयन, राइट? तो वो नेगेटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा डेफिनेटली. सो E प्लस इलेक्ट्रॉन आयन को वो इलेक्ट्रॉन को एक्चुअली वो एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज एसिड. ये लिवाइस ने कहा.
सी अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की। ये हम एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन मान सकते हैं एसिड एंड बेसिस की। एवरी थियोरी इफ यू अंडरस्टैंड इट डीपली meaning the same, but the definitions are different, the procedure that they are saying or referring to are different. सो एसिड यहाँ पर बोला गया कि इज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बेस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटर होता है, एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करता है। ओके, दैट वाज लेवाइस's कॉन्सेप्ट। यूसनोविच कॉन्सेप्ट क्या था? यूसनोविच वाज अनदर साइंटिस्ट। उन्होंने बहुत एक जनरलाइज्ड अप्रोच दी redox reaction के लिए। redox reaction is a term used for reduction oxidation reduction reaction. It's a combined term for oxidation reduction reactions which is known as redox reactions. So यूसनोविच कॉन्सेप्ट ने एक बहुत ही जनरल डेफिनेशन दी एसिड एंड बेसिस के लिए कि जो भी मॉलिक्यूल कैटायन को डोनेट कर दे, कैटायन यानी कि पॉजिटिव आयन, तो जो भी मॉलिक्यूल कैटायन को डोनेट कर दे उसको हम एसिड बोल देंगे, और जो भी मॉलिक्यूल एनायन को डोनेट कर दे या नेगेटिव स्पीशीज को डोनेट कर दे, नेगेटिव मॉलिक्यूल को डोनेट कर दे, उसको हम बेस बोल देंगे। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड यूसानोविच का कॉन्सेप्ट, he did not say कि वो H प्लस है या वो H माइनस है या क्या है। he said कि जो भी मॉलिक्यूल कैटायन को डोनेट कर दे, पॉजिटिव स्पीशीज को डोनेट कर दे, उसे हम एसिड्स बोलते हैं, और जो भी मॉलिक्यूल नेगेटिव स्पीशीज को डोनेट करे, एनायन को डोनेट करे, उसे हम बेस बोलते हैं। सो यूसानोविच कॉन्सेप्ट वाज दिस। Okay, moving forward, what are the properties of acids? We have understood the basic theories given by the different scientists for acid, bases and salts. Now, what are the properties of acids? How do you identify that is an acid or not? So see, acids are sour in taste. They are generally sour in taste. Acids are corrosive in nature. They corrode easily by the environment, by the gases, by the general environment. So they they undergo this process of corrosion very easily. And to identify, to test if it is an acid or not, we use litmus paper. There are these litmus paper जिसका pH के through test किया जाता है. It's a basic chemical reaction जो कि की जाती है to understand if it is an acid or not, if it is a base or not. तो litmus paper को what we do is litmus paper को we dip it in the acid or bases or whatever solution we have, and if it is a blue litmus paper, and if the blue litmus paper turns into red color, we identify it through color. So if the blue litmus paper turns into red color, that means it is an acid. Now what is pH? How are how is this color change tells us that if it is an acid or not, that I am going to explain. But we for now need to understand that if the litmus paper is getting turned into red from blue color, then it is an acid. To understand it, there is a simple trick that we pronounce it by name bar. B stands for blue litmus blue color, A stands for acid, and R stands for red color. So bar is when acid turns the blue litmus paper into red, that is an acidic compound. Acidic compounds are also conductive in nature. They conduct electricity in aqueous solutions. So aqueous solution में अगर we connect them with electricity, so they conduct electricity very well. They are good conductors, and they react with metals to produce hydrogen gas. Acids are reactive towards metal, and they reacts with metals to produce hydrogen gas. They also react with bases. When they react with bases, the salt formation takes place. जब acid और base combine होके एक compound बनाते हैं तो salt बनता है. Basic example can be HCl plus NaOH. HCl is the acid here,
NaOH is a base here. So HCl plus NaOH, HCl donates H plus ion and NaOH donates OH minus ion. Combinedly they make NaCl compound, which is a salt, basic salt which we use in every household. So that's how salts formations takes place. The properties of bases. How can we identify if it is a base? Bases are bitter in taste. Like I said, acids are sour in taste. Bases are bitter in taste. They have a slippery touch or soapy touch, you can say. Okay, bases. Bases turn red litmus paper into blue. जब red litmus paper blue color में change हो जाए, that's bases. So the trick to understand it is RBB. When red color changes into blue color, then it is a base. Bases also conduct electricity in aqueous solutions. They react with acids to form salts and water. Acid के साथ वो react करते हैं salt and water बनाने के लिए. जो बहुत ही strong bases होते हैं ना, जिनका pH मतलब बहुत ही strong bases को रेफर करता है, वो corrosive होते हैं नेचर में. Weak bases corrosive नहीं होते हैं नेचर में. Okay? Acids mainly corrosive होते हैं नेचर में. Now acid base strength and pH. अभी मैंने जो terminology use की pH और acid base strength, what is that? pH is a negative logarithm of hydrogen ion concentration. See, if you understand it by the name, it's pH. H means hydrogen ion. जब हम hydrogen ion का concentration समझते हैं, so it's a negative logarithm of hydrogen ion concentration which we understand. उसे ही हम pH बोलते हैं. Acids का जो pH होता है वो 7 से नीचे होता है. Bases का जो pH होता है वो 7 के ऊपर होता है. 7 is considered as a neutral pH. 7 पर अगर कोई pH आ रहा है तो उसका मतलब है वो neutral pH है ना, जैसे mainly salts का वो होता है. ओके, तो अगर 7 किसी का आ रहा है तो दैट्स अ न्यूट्रल पीएच. सॉल्ट्स का मेनली न्यूट्रल पीएच होता है, जो क्योंकि वो एसिड प्लस बेसिस से बनते हैं, तो दे न्यूट्रलाइज इन द कंडीशन, दे न्यूट्रलाइज इन द एनवायरनमेंट. सो pH again is a negative logarithm of hydrogen ion concentration. Negative logarithm, when we say, we are understanding the concentration of hydrogen ion negatively in this in any compound, that is pH. So 7 से नीचे जो अगर pH आ रहा है तो that is a acidic compound. 7 के above जो pH होते हैं that is basic compound. अगर 7 pH आ रहा है that is a neutral pH. Neutral pH often is related to the salts and neutral compounds. Okay, strong acids और bases, जो भी strong acid है या strong base है, they completely dissociates in the water. वो completely water में उनके जो ions हैं, जो उनके molecules हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं. लेकिन जो weak acid है, weak bases हैं, वो partially dissociates होते हैं, completely dissociate नहीं हो पाते हैं. Okay, Ka and Kb. See, Ka and Kb is acid base dissociation constant. मैंने अभी आपको बताया कि weak acid है, strong acid है, उस हिसाब से वो dissociate होगा aqueous solution के अंदर, and उसी तरीके से base का भी है. तो उस कितना वो dissociate हुआ उसको quantify करने के लिए we use a dissociation constant termed as pKa and pKb. Okay, what is the relationship between pKa, pKb and strength of acids and bases? So pKa जितना कम होता है, dissociation constant जितना कम होता है, उतना ही ज़्यादा acidic strength होती है. pKa जितना कम होता है उतना ज़्यादा strength of acid होती है, उतना ज़्यादा वो acidic strength उसमें होती है, उतना ज़्यादा वो प्रोटॉन डोनेट करने के लिए capable होता है. So जितना कम pKa उतना ज़्यादा strength, they are inversely proportional. pKa जितना कम जितना लो उतना ज़्यादा strength of acid ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा उसमें capability होगी to donate a proton ion. Okay, उसी तरीके से बेस का रिलेशनशिप है, pKb का रिलेशनशिप है. Now what are salts? I've been referring to salts again and again in this presentation. Now what are salts? See, salts जो होते हैं
they are formed by neutralization of acids and bases. जब एसिड्स और बेसिस के मिलने से जो कंपाउंड बनते हैं उसे हम सॉल्ट बोलते हैं. Salt can be NaCl. There are so many types of salts present जो कि दो कंपाउंड एसिड और बेसिस के मिलने से बनते हैं. ठीक है. See, acidic and base acids and bases, since they are opposite in nature, they attract each other, and since they attract each other, the formation of salts takes place. Now the salts can be acidic, the salts can be basic, the salts can be neutral. They can be neutral, they cannot be neutral. It depends on the parent acid or basis. Like what is the parent acid or basis, and if we are combining a strong acid with a weak base or strong base with a weak acid, whatever the situation, so it leads then to either strong acid, acidic salt or न्यूट्रल सॉल्ट. अगर दोनों का सेम पीएच है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड को आप स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कर रहे हो, वो सारे कोरिलेशंस होते हैं एंड दैट लीड्स टू इफ द सॉल्ट इज गोइंग टू बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर. That we are also going to be studying in this presentation. Now hydrolysis of salts influences solution pH. जब हम सॉल्ट्स का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलिसिस? जब हम पानी में उनको अलग अलग करवाते हैं सॉल्यूशन में, व्हेन वी पुट द सॉल्ट एंड व्हेन इट डिसोशिएट्स, दैट इन्फ्लुएंसेस द सॉल्यूशन पीएच. वो फिर जब अलग अलग आयन हुए, जब आपने पानी में सॉल्ट को मिलाया, पानी में सॉल्ट को मिलाने के बाद जब आयन्स अलग अलग हुए, सो नाउ दैट विल इन्फ्लुएंस द पीएच. कि वो स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इट विल गो टूवर्ड्स द एसिडिक पीएच. स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है तो इट विल गो टूवर्ड्स द बेसिक पीएच. अगर नॉर्मल है, दोनों के दोनों सेम लाइक कैपेबिलिटी है, दोनों सेम लाइक न्यूट्रल तो नहीं हो सकता बट सेम अगर उनका स्ट्रेंथ है, तो देन दैट विल लीड टू अ न्यूट्रल पीएच. तो उस तरीके से हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स इन्फ्लुएंसेस द सॉल्यूशंस पीएच. व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सॉल्ट्स? सॉल्ट्स आर वाइडली यूज्ड इन एवरी इंडस्ट्री. फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री में यूज होते हैं, फ्रूट प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री, प्रिजर्वेशन के लिए भी बहुत यूज होते हैं. सो मीट के लिए, मीट को हम प्रिजर्व करते हैं सॉल्ट के साथ. इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में काम आते हैं, फर्टिलाइजर्स में सॉल्ट्स काम आते हैं. सो दैट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सॉल्ट्स. नाउ व्हाट आर द टाइप ऑफ सॉल्ट्स? सॉल्ट्स कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं? सॉल्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स. न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर उनका pH 7 है, अगर वो pH जो है एसिडिक या बेसिक साइड पे नहीं जा रहा है, इफ इट इज 7 इन नेचर, देन इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट. एसिडिक सॉल्ट अगर एसिडिक साइड पे pH जा रहा है, आफ्टर डिसोशिएटिंग इट इनटू द एक्वस सॉल्यूशन, एसिडिक साइड पे pH जा रहा है, एसिडिक यानी कि 7 से कम जो होता है वहाँ पे pH जा रहा है, तो इट इज अ एसिडिक सॉल्ट. बेसिक सॉल्ट यानी कि 7 से अबव अगर pH है सॉल्ट का, एंड इफ इट इज बेसिक इन नेचर, देन इट्स अ बेसिक सॉल्ट. डबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या होते हैं? सी, डबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स जो होते हैं ना, दे आर not only formed by acid and bases, but they are formed by multiple compounds. उनके लिए सिर्फ acid और bases की ज़रूरत नहीं होती, but acids plus bases plus फिर different और भी compounds हैं जो use किए जाते हैं उनके लिए, तो उसे हम बोलते हैं डबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. जब एक से एसिड और बेसिस के अलावा जब हम मल्टीपल कंपाउंड्स को यूज करते हैं, बिकॉज डबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स के लिए ओनली एसिड एंड बेसिस आर नॉट इनफ, और मल्टीपल कंपाउंड्स यूज होते हैं. तो जब मल्टीपल कंपाउंड्स यूज करने के बाद जो सॉल्ट्स बनते हैं, दे आर नोन एज डबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स. ओके, उनका जो pH होगा, दे विल that will also dependent on parent acid and bases. Okay, now I have here included a comparative table of acids and bases, or about their properties and everything. So acids का taste मैंने बताया, it tastes sour. Bases on the other side, it tastes bitter. Acids turn the blue litmus paper into red color. Bases on the other hand turns the red litmus paper into the blue color.
पीएच जो होता है एसिड्स का 7 से कम होता है, बेसिस का जो पीएच होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। पीएच जो है वो 7 से लेस होता है एसिड्स का। इसका क्या मतलब है दैट इट इज इंडिकेटिंग अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होंगे उतना ही लो पीएच होगा एसिडिक, बिकॉज दैट इज रेफरिंग टू एसिडिक पीएच। बेसिक पीएच का मतलब क्या है, उतने ज़्यादा उतने ज़्यादा नहीं, उतना कम हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन है। सी, pH is only and only understood by the level of hydrogen ion in the solution. It is not related to hydroxyl ions at all. So pH जब हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा तो pH जो है वो लोअर साइड पे रहेगा, बहुत कम होगा तो वो बेसिक साइड पे चला जाता है। ये एसिड्स जो होते हैं ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्रोटॉन डोनर्स होते हैं, बेसिस प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। लेवाइस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं और बेसिस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं। सो दिस इज comparative study. Now applications of acid, bases and salts कहाँ कहाँ यूज आते हैं। एसिड्स फर्टिलाइजर्स में यूज आते हैं, जैसे H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। फ्रूट प्रिजर्वेशन में यूज आते हैं, फ्रूट प्रिजर्वेशन के लिए एसिटिक एसिड यूज होता है तो एसिड्स उसमें यूज आते हैं। बेसिस सोप इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज आते हैं, डिटर्जेंट्स में NaOH KOH, सो इंडस्ट्री डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज आते हैं। सॉल्ट्स जो हैं फूड में NaCl इज यूज्ड इन एवरी हाउस होल्ड, सो NaCl सॉल्ट जो होता है वो यूज होता है। CaSO4 प्लास्टर में सॉल्ट यूज होता है। CaSO4 is made up of calcium hydroxide and CaSO4 is calcium sulfate which is made up of calcium carbonate and sulfuric acid. So उस तरीके से CaSO4 is a plaster which is used in the industry. Then Na2CO3 glass industry में यूज आता है। Biological importance क्या है, buffer system maintains blood pH. Buffer systems क्या होते हैं? Buffer systems are the compounds that resist the change of pH when included in the solution. So they maintain blood pH. जब भी कोई study diagnostic study या research study होती है, buffers chemistry chemical reactions में बहुत important होते हैं because that is a solution that can resist pH change upon the addition of any acidic or basic compound in the solution. Okay, some advanced theories are also there for acid and bases. First is Usanovich concept, which I've already explained, that anything that can donate a cation or a positive species that is acid is termed as acid, and anything that can donate a negative ion or anion is bases. Okay. Next theory is Lux flood theory. Lux flood theory क्या कहती है that acids are oxide ion acceptors. Oxide ion यानी कि OH minus ion को accept करते हैं acids, ये बोलती है लक्स फ्लड थ्योरी। एंड बेसिस आर ऑक्साइड आयन डोनर्स, तो ये ऑक्साइड आयन पे बेसिकली फोकस कर रही है। सो एसिड्स ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर्स होते हैं, बेसिस जो है वो ऑक्साइड आयन डोनर्स होते हैं। सो दैट इज लक्स फ्लड थ्योरी। HACB प्रिंसिपल, it is not a theory but it is a principle which is widely used in the chemistry. HACB principle कहता है कि जो hard acids होते हैं it prefer hard bases only, and जो soft acids होते हैं वो हमेशा soft bases के साथ compound बनाते हैं। By meaning, by saying hard and soft, I am not referring to lower strength and higher strength, hard acids and hard bases as in composition. So that's that. Solvent system concept is also a concept which is widely used. So it says that acid is equals to species that increases the solvent cation. Solvent is basically जिसमें हम solute को डालते हैं, जैसे कोई भी अगर चीज है जिसमें जैसे पानी है तो पानी में वी आर मिक्सिंग दी सॉल्ट, तो सॉल्ट इज सॉल्यूट एंड पानी इज सॉल्वेंट हियर। सो सॉल्वेंट के केटायन को जो बढ़ा दे, सॉल्वेंट के केटायन को इंक्रीज कर दे अमाउंट में, दैट इज एसिड, एसिड बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। नाउ नेक्स्ट इज एसिड बेस इक्विलिब्रियम। सो
एसिड बेस इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट जहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है उस रिएक्शन में, उस पर्टिकुलर रिएक्शन में, व्हेन द रिएक्शन स्टिल्स इटसेल्फ, उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जहाँ पर जो रिएक्शन है वो फर्दर आगे नहीं बढ़ती, पीछे नहीं जाती, वो वहीं पे स्टैंड स्टिल हो जाती है, वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम लाइक वो इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। सो बफर सॉल्यूशंस क्या करते हैं? बफर सॉल्यूशंस इक्विलिब्रियम को तक रिएक्शन को पहुंचाने में बहुत मदद करते हैं। सी एवरी रिएक्शन व्हेन इट स्टार्ट्स द रिएक्शंस एम इज टू रीच द इक्विलिब्रियम स्टेज। किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम तक पहुंचना ही उसका कंप्लीशन को बताता है। So buffer solutions क्या करते हैं? When buffer solution is added into a solution, they resist the change in the pH, be it a acidic compound, be it a basic component. So buffer solutions को जब हम chemistry में कोई chemical reaction use करते हैं, and if we are including the acid and base, and if we don't want to change the pH of the solution, then we add the buffer जिससे वो pH जो है वो change नहीं होता है. So the importance of buffer solution in chemistry is wide. Okay. Next is Henderson-Hasselbalch equation. Henderson basically was a scientist which chemist which gave this equation, जिसमें हम pH और pKa which is a acidic dissociation constant, उसके रिलेशनशिप को पढ़ते हैं. सो pH is equals to pKa plus log 10 of A minus by HA. A minus here is referring to conjugate base, the concentration in the molar concentration of conjugate base of an acid, and HA is the concentration of a weak acid. HA is the concentration of weak acid. So ये एक रिलेशनशिप बताता है बिटवीन pKa एंड pH. सो मैंने आपको बताया जितना कम pKa उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी उसकी, जितना कम pKa होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी. एंड pH ऑल्सो सेज द सेम, जितना कम pH उतना ही ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी. So that is a reaction, or that is the relationship given by Henderson-Hasselbalch. Okay, and there is one more thing. So when half of the acid undergoes dissociation, जब आधे acidic molecules जो dissociate हो जाते हैं aqueous solution के अंदर, तो जो HA और HA का जो concentration हो जाता है ना, वो 1 हो जाता है. When half of the acid undergoes dissociation, the value of A by HA becomes 1, which implies that the pK of the acid is equal to the pH of the solution at the point which is 1. जो pK और pH होता है वो बराबर हो जाता है उस टाइम पे solution का, जो कि 1 हो जाता है. Okay. Now salt hydrolysis. Hydrolysis is basically जब आप पानी में डालते हो वो dissociates होते हैं, that is salt hydrolysis. So salts of weak acid. अगर weak acid plus strong base से आपने salt बनाया, मतलब base strong है लेकिन acid weak है, तो वो basic solution हो जाएगा. ये मैंने आपको बता दिया है. Salts of strong acid plus weak base, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो वो एसिडिक सोल्यूशन, pH जो है वो एसिडिक साइड पे जाएगा. सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. अब अगर दोनों ही स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग है या फिर दोनों ही स्ट्रेंथ जो है वो वीक है, देन pH डिपेंड्स ऑन डिसोसिएशन कांस्टेंट, कि वो डिसोशिएट जब हुए तो डिसोशिएट होने के बाद फटाफट pH किसका बना, राइट? किसका pH वो पर्टिकुलर सोल्यूशन लेगा, तो वो दैट डिपेंड्स ऑन Ka एंड Kb. डिसोसिएशन कांस्टेंट, कौन जल्दी से डिसोशिएट हो रहा है, कौन फास्टर डिसोशिएट हो रहा है, कौन कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है पहले, वो सब उस पर डिपेंड करता है फिर pH. हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH होता है. जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है वो व्हेन इट रीचेस टू, उसको जब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH होता है. सो हाइड्रोलिसिस को क्वांटिफाई करने के लिए देयर इज दिस टर्म हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट व्हिच इज आल्सो एब्रिविएटेड एज KH. Moving forward, types of salts we have already studied. Here are some examples. Neutral salts, NaCl, दोनों में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयन होता है, Na plus Cl minus, which neutralizes in the end, so NaCl. KNO3 is also a neutral salt. Acidic salts में NH4Cl is a acidic salt because यहाँ पर acid जो है वो acidic pH जो है वो ज़्यादा होता है, strong acid होता है इस वजह से.
AlCl3 is also an acidic salt. Basic salts में CH3COONA is a basic salt, Na2CO3 is a basic salt, क्योंकि यहाँ पर बेस जो है वो स्ट्रांग था, एसिड जो है वो कम था, वीक था. डबल सॉल्ट्स जो हमने पढ़ा, डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, so डबल सॉल्ट का एग्जांपल है मोहर्स सॉल्यूशन, एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जांपल इज CuNH3,4SO4. so that is some examples of complex salts and double salts. So here at last I have included a comparative table to understand some points about acid, bases and salts. Acids जो होते हैं, by now we all understood that acids जो होते हैं प्रोटोन डोनर होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, प्रोटोन डोनर होते हैं. बेसिस ऑन दी अदर हैंड प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं, कैटायन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं. Salts ionic compound होते हैं, they are neutral in state, they do not donate and receive. Okay, so ionic compounds होते हैं. Acids का जो pH होता है वो 7 से कम होता है, bases का जो pH होता है वो 7 से ज़्यादा होता है. Salts जो होते हैं वो या तो न्यूट्रल हो गए, न्यूट्रल मतलब 7 pH होगा, एसिडिक होंगे या फिर बेसिक होंगे. एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे ये डिपेंड करता है आइदर द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट पे, बोथ आर वीक और बोथ आर स्ट्रॉन्ग इन स्ट्रेंथ. ओके, सम एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स आर HCl and H2SO4. Some examples of bases are NaOH, KOH, and some examples of salts are NaCl, CH3COONA. Okay, so yeah, that's that. Thank you so much for tuning in. If you have any doubts on any particular slide number or any particular line or this topic entirely, please do let me know below in the comment section. I will definitely reply to each and every one of you. And if you want any particular topic of your choice to be explained by me, please do let me know below in the comment section. I will definitely try to make a separate video on the topic suggested by you guys. So yeah, thank you so much. Please do like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you so much for tuning in. I will be back with more such videos. Thank you. Bye bye. Take care.